हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? हाय वेदांत, अंचित, वैभव, हेलो, हाय अनुज, खुशबू, सीरत, शीतल, चंदन, ऋषु, अंचित, अक्षय, सीमा। गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। या I hope you guys are doing amazing. I hope your week so far has been great. कल से वीकेंड है, मतलब कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है उसमें, वो जस्ट इन्फॉर्मिंग। बिकॉज राइट नाउ ऐसा सीन हो गया कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। यस, एक्सेप्ट फॉर नवंबर एंड के अलावा आपके पास दिमाग में कुछ और टाइम भी नहीं रहेगा, है ना। मतलब if one date, if I ask you off the top of your head, you would definitely have November 29 in your mind. उसके अलावा yeah. Hi Shahid, welcome buddy, welcome. If it's your first class, welcome. But if you want to have a word with me, you can definitely text me on Telegram. I'll give you my Telegram ID. This is our third lecture on inequalities, and my name is Amit Sir. I am an aeronautical engineer from Chennai with over 6 years of experience teaching quantitative aptitude across different platforms and examinations, and I've helped over 2 lakh students achieve their goals. When you plan on sharing this, when you share this on your social media platforms, please do not forget to use hashtag CAT Live Daily, and do not forget to tag me as well on it. I would definitely be glad to see some of you do that. So our agenda for today, we had yesterday looked at quadratic inequalities. Today we'll be going on higher degree inequalities. Yes, we'll be looking at cubic and all higher degree inequalities, that is polynomial inequalities. And we'll be looking at one particular method called the wavy curve method that would actually help us, because based on what a lot of you had told me yesterday कि सर ये आप रेंज जो निकाल रहे हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और सर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है या इसमें रिस्क बहुत है, तो आई थॉट someone actually had suggested also yesterday कि सर वेवी कर्व मेथड बता दो. This is nothing but critical point method, but just इसको fancy sound कराने के लिए wavy curve method करके बोलते हैं, है ना. There's nothing extra that you'll have to do. In fact, this will drop down a lot of steps that is involved, है ना. And anyone who is considering taking plus, कोई तो पूछ रहा था यहाँ पे sir, are you on plus platform or no? Definitely I am. I have started a lot of courses there as well. Yes, both paid and free. And if you are looking for some quality classes, especially in an environment जहाँ पे full motivation हो, तो you can definitely get yourself enrolled. इसके बारे में भी आपको कोई questions हो, कोई doubts हो, मेरे को पूछेगा. Look at the price. It's very light on your pocket, does not affect much compared to 60-70 grand that you would have paid outside, है ना. So this basically is just 1/4 of that, and with 4 times more quality. Yes, so 4 times more content, 4 times more access to live videos, recorded videos, and mock tests at 1/4 of the price. Yes, so you being an Indian would definitely understand कि ये वाला जो deal है is a 1 in a million kind of a deal, and if you use my referral code Surana Life, तो आपको इसके ऊपर और 10% डिस्काउंट मिलेगा, है ना. तो कंसिडर दिस. लेट मी नो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दिस. इसके बारे में कोई क्वेश्चंस और डाउट्स डेफिनेटली होने चाहिए. बिना डाउट, बिना कोई क्वेश्चन पूछे, आई डोंट इवन वांट यू टू जॉइन दिस. पूछो, इसके बारे में पता करो क्या है, लोगों से रिव्यू लो और फिर आओ, ठीक है. चलो, this is a quick information on a session that I am doing tomorrow at 4 p.m. Yes, 4th July, tomorrow at 4 p.m. I'm doing a session where we talk about CAT preparation online versus offline. Yeah, so I would definitely want you all to join this. Yes, so if you look in the channel, upcoming में रहेगा ये, उस पे set reminder पे आप click कर दोगे तो आपको कल remind कर देगा जब मैं live आऊँगा, है ना. I would definitely want all of you all to join this. Yes.
This will give you some perception also, and anyone who's been second guessing या doubt है खुद पे कि सर मेरे को नहीं पता मैं बराबर कर रहा हूँ prepare कि नहीं, this will definitely give you a clearer picture. Yeah. चलो तो let's begin with polynomial inequalities. Yes. अंचित बोल रहे कि जेई पोस्टपोन हो गया है. ओके ओके let's have our fingers crossed. Let's see. गौरव को सोते जागते एफएमएस दिख रहा है. जागते अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, सोते अगर दिख रहा है तो थोड़ा दिक्कत वाला सीन है. अच्छा ठीक है. पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज इज, so how you would solve this is how you would solve polynomial equations. Yes, just that instead of equating it to the RHS, or instead of equating it to 0, you would find out if it's less than, greater than, less than or equal to, or greater than or equal to. Yes. So on the screen right now is an example of a cubic expression. So cubic inequality है अपने सामने. Yeah. X plus 2 into x plus 4 into x plus 6 should be less than 0. Yeah. So ये अपने पास है. Yeah. ये वाला try करो, बताओ मेरे को इसका आंसर क्या आ रहा है आपको. Quick everyone, try this one out and let me know what the answer is, and I'll tell you how to go ahead and solve this. ठीक है. Now a very good thing about this particular question is what, कि यहाँ पे जो काम हमें करना चाहिए था ये question खुद कर दिया है ना. All work that we were supposed to do, yes, this particular thing has been done for us, है ना. ये क्या होता है, ये होता x cube plus something all the way till 48 is less than 0, है ना. ये ऐसा होता. Yes, but what is done for us is इसको factorize कर दिया इन्होंने already. So all that we now have to do is look at each of these things. Yes. Now कल तक हम क्या बात कर रहे थे कि अगर ऐसा सीन है, if you have two expressions, दोनों प्लस होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, or whatever, right? So here we need the product of these three to be negative. The only possibility for that is what? Odd number of expressions here. Odd number of expressions should be negative, है ना. या तो एक expression negative होना चाहिए, या पूरे के पूरे 3 negative होने चाहिए. Yes. If we have 0 negative तो क्या हो जाएगा, actual value positive हो जाएगा. If we have 2 negatives, so 2 negatives together will end up being a positive term. Yeah. So instead of doing all of this, now we need what? Either one of these to be negative, तो उसके लिए थोड़ा लोचा होगा. फिर all 3 of them negative, that's pretty easy. Yeah. So let's talk about a way in which we can identify the range directly. First things first, आप direct application करोगे तो ये आ जाएगा, है ना. If you directly apply this, you would get it. Which of these answer choices can you blindly eliminate? -2 to infinity. -2 to infinity मतलब क्या है? 0 is a part of it. And I know if I substitute 0 here, I would get my value as 48. मेरे को 48 is not less than 0. I know that. This is out of the picture. Similarly, this is also, oh no, ये नहीं है. This is not out of the picture. So this is still there. Yeah. Okay. The next thing. इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप अप्लाई करके देख लो, राइट. अप्लाई एनी ऑफ दीज वैल्यूज. लेट्स से -3 if I apply, let's say if I apply -3, right, या -5 ले लो यहाँ पे. In this case -5, would it satisfy? -5 would it satisfy? यहाँ पे अगर -5 है, -5 plus 2 नेगेटिव रहेगा, -5 plus 4 नेगेटिव रहेगा, बट -5 plus 6 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. 2 negative terms into 1 positive term would definitely give us a positive term. Yes. Would you agree? So can I let this one go as well? Yes. तो मतलब क्या हो गया? C is also out. The only answer that stands true here is option A. Yes. But ये तो चलो हम we were lucky that this worked out. Answer choices were very silly, but that wouldn't be the case in most questions, है ना. The answer choices may not be silly. The answer choices may end up being a little complex also. So our first step, normally if we had our polynomial in this form, our first step would have been to factorize it. Yes, जो कि हमारे लिए करके दे दिया है उन्होंने. So now what we have to apply is that wavy curve method. Yes, baby curve नहीं, wavy
wavy curve method which will help us identify the critical points जहां पे sign changing points है. For example, if x plus 2 should be less than 0, if x plus 2 should be less than 0, if I were to equate it to 0, x का value क्या आ जाएगा, -2. Yes, that basically means what, अगर ये मेरा यहाँ पे 0 है तो this is -2. Yes, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, when my value is equal to -2, when my value is equal to -2, the entire thing becomes 0, but I don't want that, I want it less than 0. Yes, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका value has to be definitely less than -2. Yes, same way x plus 4 पे देखिए, entire thing again, x plus 4 if it's equal to 0, then our critical point, our sign changing point क्या हो जाएगा, x is equal to -4, क्योंकि अगर x -4 है तो this entire expression would become 0 and making the whole LHS as equal to 0, जो कि not allowed. Yes, so x -4 is a critical point, same way x -6 is a critical point. Yes, got it. So these are the critical points. Now what I want you to do between these critical points is just plug in one of these values and check के इसका value क्या आएगा. अपन को negative चाहिए, yes, अपन को negative चाहिए, but let's see positive आने के लिए क्या करना होगा, right? Or what would happen if we plug in one of these numbers? Yes, so अगर मैं 0 से ऊपर कुछ भी value, -2 से ऊपर मैं कुछ भी value डालूंगा, पक्का क्या आएगा, positive ही आएगा. Yes, any value more than -2 would turn out to be positive. Do I want that? Not really, but for now let's just judge this. ठीक है. Now what if I plug in a value between -4 and -2, let's say -3. अगर मैं इसका value -3 plug in करूंगा तो क्या हो जाएगा, this will become negative. Yes, -3 plug in करूंगा, ये negative हो जाएगा, -3 plus 4 positive, -3 plus 6 positive. तो अपना final value क्या आ रहा है, negative, right? Negative plus positive plus positive. Yes, so here this would be negative. -6 और -4 के बीच में क्या है, -5 प्लग इन करके देख लो क्या होगा, -5 अगर प्लग इन करोगे तो क्या हो जाएगा, this would be negative, -5 में this will be negative, this would be positive. तब two negatives and a positive would end up being what, greater than 0. हमें क्या चाहिए, less than 0. so ये नहीं, ये positive होगा. And plug in a value less than -6, आपको पता है -6 से कोई भी value कम होगा तो सब negative हो जाएंगे. That basically means this entire thing would be negative. Yes, are you getting this? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे what you have to keep in mind is हम we can also look at the powers of these terms, right? This is 1 1 1. तो जब भी आपके powers अगर odd है तो sign will keep changing, opposites होते रहेंगे, पहले प्लस था, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन. यस, तो पहले वाला आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली इट विल फॉल अंडर. या नाउ व्हाट वुड बी द वेव, हाउ वुड द वेव लुक लाइक, तो यहां तक पॉजिटिव रहेगा. यस, -2 तक पूरा पॉजिटिव रहेगा, यहां से यहां तक अपना नेगेटिव रहेगा. यस, फिर वापस यहां से अपना पॉजिटिव आना चालू हो जाएगा, फिर यहां से वापस नेगेटिव. यस, so what are the areas that we are looking for? The areas that we are looking for are these. ये वाला जहां पे नेगेटिव होगा और ये वाला जहां पे नेगेटिव होगा. Are you getting this? Yes. तो अब यहाँ पे अपना क्या वैल्यू निकलेगा, what would we look at these numbers? Look at these numbers. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 6 -6 से नीचे जो भी, that means -infinity to -6, both not inclusive, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू नहीं है. सिमिलरली हियर व्हाट, -4 एंड -2, बोथ नॉट इंक्लूसिव, तो इनका यूनियन. यस, ईदर दिस और दिस, एंड तो नहीं हो सकता, और ये होगा, है ना. तो व्हाट्स माय आंसर, ऑप्शन ए, प्रूवन बाय दिस. यस, तो आर यू एबल टू फॉलो दिस, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Let's just quickly take a poll on what would you rather do. Would you consider each of these individual expressions and then find out, या आंसर चॉइस में से अप्लाई करोगे? आंसर चॉइस में से there could be a possibility that you could miss out one or two. Yes, तो आंसर चॉइस application is definitely the best way to get rid of all of this. Yes, but this way, this is called critical point for grown-ups, for school going kids. Probably you would have also learned this during polynomials. Yes, इसको हम wavy curve method बोलते थे. Yeah, so it's better we call it the critical point method. Yes, so we plot down all the critical points
and then we figure out where would it be positive and where would it be negative. Are you getting this? Yeah, super. Hacks boy, yo boy, I don't think ये नहीं होते हैं, these are public throughout. Yes, to positive infinity, negative infinity to positive infinity, ये this would be public only, private नहीं होते ये. You can anytime go ahead and check this out. Shahid, my Instagram ID is also the same, Surana Live. तो आप मेरे को उस पे मैसेज कर दो. Surana Live is my Instagram ID as well. I definitely would love to see you there. And पूजा इतना कोई दिक्कत नहीं रहेगा. Yes, इतना कोई दिक्कत नहीं रहेगा if you missed out yesterday's session, but live मत मिस करो. That's all I would love to say कि live आप कुछ भी मिस मत करो. ठीक है, तो ये क्लियर है. चलो एक और ट्राई करेंगे to make it even better for us. Try this one out real quick. Yes, try this one out real quick. अच्छा, हैक्स भैया अपना बराबर से नाम बता दो यार, आधार वाला नाम बता दो. ठीक है. अच्छा सत्यम, कुछ वीडियोस हैं. कोई नहीं, अभी चेक कर लेंगे. यस, आज चेक करके मैं आपको आई विल गिव यू अ कंफर्मेशन. ठीक है. अच्छा, उस दिन लाइव नहीं हुआ था क्या? कोई नहीं, जाने दो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. ये वाला कौन सॉल्व किया? अंचित सिंह डी. सौरभ शायद पिछले वाले का आंसर दे रहे हैं ए. ठीक है, चलो. खुशबू सिंह डी एज वेल. ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन इज एक्चुअली अ पीस ऑफ केक इफ यू नो how to factorize this. So पहली चीज always remember the first thing we always keep in mind कि अपना RHS जो है, if we can equate it to 0, if we can make it 0, that will be the best thing that we can do with this. So add plus 27 both places. So y cube plus 9y square plus 27y plus 27 is less than 0. Yeah, no sign changes, सब ऐसा का ऐसा ही है. अब ये क्या है? Look at this guys, always keep in mind, जब भी ऐसे expressions हो, first try to find out if you can make this as a perfect square या perfect cube जैसा. तो ये y cube है, ये 27 है, दोनों perfect cubes है, right? The highest degree, the lowest degree, दोनों check कर लो, these are both perfect cubes. There's a high possibility that the entire expression would be perfect cube. ये क्या है? This is nothing but 3a square b. This is nothing but 3ab square. तो ये definitely क्या है? This is y plus 3 the whole cube. Yes, so this has to be less than 0. यहाँ पे आपको here you have no need for a number line, wavy curve, कुछ करने की जरूरत नहीं है, because you know if you take cube roots on both sides, what would you have? y plus 3 is less than 0. Yes, या अगर आपको ऐसा नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है, तो this is basically what this. Now in all these places you definitely know, in all these places if y is equal to -3, तो क्या हो जाएगा? Our entire thing would collapse, will become 0. Yes, तो -3 अपने इसमें नहीं आना, right? -3 should not be a part of our answer, which is here, तो ये नहीं होगा. So between a C and D के बीच में कुछ होना चाहिए. So this has to be what? Y is less than -3. Only if y is less than -3 will my entire value be less than 0, वरना ये positive हो जाएगा. Yes, -3, तो critical point यहाँ पे क्या है? -3. Yes, तो अगर इसको नंबर लाइन पे आपको करना ही करना है, तो this would be 0, this would be -3. Yes. Now anything more than -3 पे 0 होगा, exactly 0 होगा. Anything more than -3 क्या हो जाएगा? Positive हो जाएगा अपना वैल्यू. इससे कम क्या हो जाएगा? नेगेटिव. हमें क्या चाहिए? नेगेटिव. तो क्या है ये? कर्व अपना ऐसे हो रहा है. Yes, this is how our curve is going all the way to infinity. तो अपना क्या होगा आंसर? This part, which is what? -infinity to -3, both not included क्योंकि less than.
यस, तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन डी। बुझे एवरीवन? इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछेगा। यस, so here this is just an example of how you can identify a perfect cube term or perfect square term, जो भी। ठीक है, ठीक है, आधा घंटा हो गया गाइस, किसी ने याद दिलाया नहीं हाइड्रेट करने का, बट आई विल डू द honors. Cheers to everyone who was able to make it to our new timing. Cheers guys. आगे बढ़े, अब ये वाला ट्राई करो गाइस, क्विक ट्राई दिस वन आउट। या z cube minus 5z square plus 8z is greater than 4. Yes, so this is the term given to us, z cube minus 5z square plus 8z is greater than 4. इसको आपका रेंज निकालना है। Quick, let's see who can do this first. So always remember RHS need to be 0. फिर उसके बाद धमाल मचाओ। LHS में कुछ भी करना है करो, but LHS को 0 ही रखो. It will be easy for you to judge also. Yes. Cheers, cheers, Saurav, cheers. Any answers here? किसी का भी नहीं आया आंसर? So how would I make the RHS 0? This would be z cube minus 5z square plus 8z minus 4 is greater than 0. Yeah. Now here what would you have to do? You would have to expand this. Yes, you would have to either look at the roots. रूट्स का प्रोडक्ट आपको -4 होगा। यस, रूट्स का प्रोडक्ट आपका -4 होगा, रूट्स का सम आपका -5 होगा, है ना, और रूट्स को दो दो करके लोगे तो +8 होगा। यस, so these would be the terms, but I'll tell you a quick way to do this. A very, a foolproof way of doing this would be, look at the coefficients. Just look at the coefficients. क्या है ये? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। 1 minus 5 plus 8 minus 4. What is the sum here of just the coefficients? +1 plus 8 is +9. -5 minus 4 is -9. So 9 minus 9 क्या है? 0. That basically means if I were to plug in f of 1, yes, इस particular instance में अगर z को मैं 1 लूंगा तो मेरा value definitely 0 आएगा, है ना। So I definitely know that one of my roots is what? One of my factorizing वाला element is what? Z अगर 1 होगा तो this would be equal to 0. So Z -1 I can take common out here. Yes. So if I take Z -1 as common out here, तो इसको मैं या तो divide करूंगा पूरा long division. Yes. Or I would know what, that this would end up being z plus 2 the whole square. Yes, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा. Am I right? Yes guys. Any confusions here, anyone? इसको डिवाइड करके बता देता हूं. Yes, I'll quickly show you the long division वाला scene. तो क्या हो जाएगा? z cube minus 5z square plus 8z minus 4. You will have to divide it with what? Z -1, है ना? Because one of the terms is -1. Yes. So what would you end up getting here? This would be z square. तो ये z cube minus z square. You would end up getting what? Plus minus 4z square minus 4. तो मतलब one of these should be -2. Yeah. Okay, so this will be z -2 minus ही होगा पूरा फिर.
ठीक है, तो z स्क्वायर माइनस 4z इफ आई अप्लाई नाउ, माइनस 4z तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4z स्क्वायर, ये 8z का क्या हो जाएगा, this is plus 8z, this will become plus 4z, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, this will become 4z and this is minus 4, तो ये क्या है, plus 4 of this would give us this, है ना, 4z minus 4 is perfectly divisible. Z square minus 4z plus 4 is nothing but what, z minus 2 the whole square, है ना, so we just write it this way. If we just write it this way, now we can, you know, however you want to deal with this, you can go ahead and do that. अगर आपको नंबर लाइन पे करना है, नंबर लाइन पे करना है, तो ये रहा आपका नंबर लाइन, यस, क्या है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, 1 और 2, है ना, z equal to 1, z equal to 2, yes, so if this is 0, this is 1, this is 2, क्विकली सी 1 से नीचे अगर कोई भी वैल्यू होगा, प्लस 1 से नीचे कोई भी वैल्यू, 0 लगा के देख लो, 0 लगा के देख लो, क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, वापस इंटू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल नॉट सैटिस्फाई, यस, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, एम आई राइट, यस, अगर 0 अप्लाई किया तो नेगेटिव है, 1 अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस, इफ आई अप्लाई 1 दिस विल बी 0, anything less than 1, anything less than 1 if I apply, I know this will be negative, yes, anything less than 1 if I apply, I know definitely this will be negative, है ना, और यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, more than 1, between 1 and 2 का क्या सीन है, between 1 and 2 का क्या सीन है यहाँ पे, yes, I know if I definitely apply everything as more than 2, yes, more than 2, फिर क्या आएगा, positive आएगा, yes, anything more than 2 will definitely be what, positive, है ना. So what is our answer here now? Yes, between 1 and 2 आप कुछ भी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, let's say 1.5, है ना, between 1 and 2 1.5 if I apply, 1.5 minus 1 positive, ये negative, so this is also a part of this, yes, तो 1 से बड़ा कुछ भी, 1 से बड़ा कुछ भी and 1 से छोटा कुछ नहीं, correct, yes, so which of these say that, option B, 1 to 2 both not inclusive, yes, 1 भी inclusive नहीं है, 2 भी inclusive नहीं है, क्योंकि include करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 नहीं चाहिए, 0 से ज्यादा चाहिए, है ना, and 2 to infinity, तो 1 to 2 that is 1 to 2 both not inclusive, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to infinity both not inclusive, yes. The reason why we do not directly write this as 1 to infinity, yes, कहाँ है, 1 to infinity नहीं है यहाँ पे, let's say if there was an answer choice that said 1 to infinity, we couldn't have included that, this couldn't have been our answer, क्योंकि x equal to 2 is not allowed, getting it, got this, चलो, okay, a few questions, sir, ये division एक और बार बताना है, सत्यम, this is my bad, this is long division, this is long division, आपको डिविजन फिर से करके बताओ क्या, अब बाद में देखिएगा ना, दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, दिस इज डेफिनेटली वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, है ना, ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को टेलीग्राम पे भेजो, आई विल डू स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको मैसेज करूंगा, ठीक है सत्यम, आई गेस सत्यम यू आर इन अ कॉन्वर्सेशन विद मी ऑलरेडी, है ना, अब मेरे को भेजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा वहां पे, ठीक है. Sir, if it's just greater than 0, then how can we consider 1? Please explain. 1, why are we considering 1 as a critical point? क्योंकि अगर z का value 1 है, if I apply z is equal to 1, so here if I apply z is equal to 1, what do I get? This entire thing would become 0, right? And after 1, my entire sign would keep changing, right? So 1 becomes a critical point. Are you getting this? Manjari, I hope you are understanding this. ठीक है, चलो ये वाला होमवर्क है guys, this is our first homework, yeah, this is our first homework, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर मेरे को करके भेजेगा, या इसमें भी आप ट्राई करना, प्लीज ट्राई यूजिंग द वेवी कर्व वाला, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा उसका, wherever possible you would be able to use that, yeah. अगला चले, alright, so now we are going higher degree, cubic हो गया, cubic so far is done, yes, now we have what,
फोर्थ डिग्री, तो ये वाला ट्राई करके देखो, क्विकली ट्राई दिस आउट, आई जस्ट क्विकली आंसर सम क्वेश्चंस। चंदन ज्योमेट्री क्योंकि प्रतीक सर ले रहे हैं, प्रतीक सर 10 to 11 आते हैं, क्योंकि अभी प्रतीक सर ज्योमेट्री ले रहे हैं तो मैं ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं करूंगा, नॉट एनीवेयर इन द रीसेंट। आफ्टर अलजेब्रा विल गो टू मॉडर्न मैथमेटिक्स, यस, तो मॉडर्न मैथमेटिक्स कवर करके फिर उसके बाद हम जाएंगे नंबर सिस्टम्स एंड देन विल मूव ऑन टू ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम्स आगे का बाद में का है, बट इसके बाद मॉडर्न मैथमेटिक्स फॉर श्योर, ठीक है, बिकॉज वी आर बोथ कवरिंग थिंग्स पैरेलली, हम दोनों पैरेलली कवर कर रहे हैं ताकि ज्यादा कवर हो जाए इन लेस स्पैन ऑफ टाइम, है ना। सर आपने बिना डिवाइड किए कैसे पता किया z-2 का स्क्वायर है? So when you take z-1 कॉमन आउट फ्रॉम देयर, वहां से अगर आप z-1 कॉमन आउट लेते हो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या बाकी रहेगा। यस, गॉट इट। पूजा इज आस्किंग सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? डायरेक्टली नहीं, बट देयर हैव बीन सिचुएशंस जहां पे इनडायरेक्टली ऐसा कुछ पूछा गया है। यस, and that's the reason why we are focusing on these, right? इस पे अलग से फोकस कर रहे हैं क्योंकि there are high chances of this being asked in a question in a test. Okay, Rani says option B है, Harika says B, okay, two people saying B, Vibhor saying D, all right, chalo let's try this out, let's check how this works. SK, okay, ठीक है, let's try this out. Now यहाँ पे क्या करेंगे, what we'll do here, see, whenever you have a polynomial जहाँ पे आपका variable you can take common out, your first attempt should be that. Yes, so let's take out the variable common, that is x square. So if I take x square common, what do I get? This would be x square plus 4x minus 12. Am I right? Yes, so this has to be greater than or equal to 0. Yes. Now further what I can write this as what? Negative 12 को split करना है, 6 and 2 plus 4 होना चाहिए तो minus 2, तो I can write this as what? X square into x plus 6 into x minus 2 should be greater than 0. Yeah, so this is how you factorize, ठीक है। अब इसको x square आपको लेना है तो ले सकते हो, if you want to call this as x into x, if you don't want to confuse yourself, the choice is yours, ठीक है। Either which ways, what are the critical points? Quickly guys, can someone tell me what are the critical points? यहाँ पे क्या है, if x is equal to 0 itself is a critical point, है ना, x equal to 0 itself is a critical point. Next, what do we have? X equal to minus 6 is a critical point, x equal to plus 2 is a critical point. Am I right? Yeah, so these are the critical points. Let's plot them. We have 0, we have positive 2 and we have negative 6. Yes. Now quickly look at this and tell me कहाँ पे positive रहेगा, कहाँ पे negative रहेगा। If x is greater than 2, at 2 तो 2 इंक्लूसिव रहना चाहिए हर जगह पे। Yes, क्योंकि less than और equal to है ना, दोनों है, less than भी है, equal to भी है, right? तो 2 इंक्लूसिव रहेगा, 2 से ज्यादा कोई भी वैल्यू अगर हुआ तो पॉजिटिव होगा डेफिनेटली। Yes or no guys? If my value is greater than 2, this will definitely be positive. I can look at this and say क्योंकि x अगर 2 है तो 0 होता है, मतलब उससे ज्यादा होगा तो पूरा पॉजिटिव बनेगा, है ना। Between 0 and 2, let's say 1, अगर 1 लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, this will become negative, right? If x is equal to 1, if I substitute, apply और substitute को mix करके supply बोल दिया, then this will be negative. Yes, क्योंकि 1 minus 2 is minus 1, बाकी सब जगह पॉजिटिव रहेगा, तो entire term would become negative, so negative. Now between 0 and negative 6, ये याद में रखना है आपको कि 0 has to be included. Yes, क्योंकि यहाँ पे x है, so this will be counted. And between 0 and minus 6 को अप्लाई करके देख लीजिए, apply minus 1 or whatever. Yes, minus 1 में क्या हो जाएगा, this will become negative, this will become negative, this will be positive, this will be negative, है ना। So what do you have? 3 negative terms, 1 positive term, negative रहेगा, that would satisfy. So this would satisfy. Minus 6 should also be a part of it. Less than minus 6 कुछ apply करोगे तो क्या हो जाएगा? Anything less than minus 6 if you apply. Minus 6 negative, minus 6 negative,
-6 से कम कुछ भी लगाओगे, this will be negative, this is also negative. पूरा negative मतलब क्या? 4 times negative is positive, तो यहाँ पे positive है. Yes, so this entire thing is negative. So how should our curve look like? Our curve should be like this. Starting from here, यहाँ पे positive है, यहाँ पे negative, यहाँ पे change करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे वापस negative, फिर यहाँ से positive, है ना? This is how our curve would look like, and these are the areas I would have to shade. Yes, so this basically covers what? This basically covers the entire region between -6 and 2 inclusive of it. Yes, -6, 2 inclusive of it. So what's my answer? Option D. ठीक है, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप देख लीजिए एक बार. Yes, I'll tell you why C cannot be my answer. C cannot be my answer because it's saying anything more than -6 cannot be a part of it. Yes, anything more than -6 cannot be a part of it. तो -6 से ज्यादा थोड़ा कुछ भी अप्लाई करके देख लो क्या आता है. Let's apply here. Let's apply x is equal to क्या, -6 and -2 लगा के देख लो. Yes, और -1 लगा के देख भी लिया था हमने ऑलरेडी, but let's try this again. ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? -1 + 6 पॉजिटिव, -1 - 2 नेगेटिव. तो 3 times नेगेटिव मतलब ये हमारा आना चाहिए, but C is not including x is equal to -1. Are you getting this? C के हिसाब से -1 नहीं आना चाहिए, but -1 आना चाहिए. So C is out, B is out, A is out. Got it? Yes. तो anyone who said option C, B या A, आपको समझ में आ गया क्या गलती हुआ है guys? Yes, वैभव, क्रेजी स्टार गैंग, ठीक है. तो इसमें भी आपको क्या ध्यान में रखना है guys? What do you have to keep in mind? Common it out, factorize. Yes, two steps. Step 1, RHS must be equated to 0. Step 2, factorize. That's it. Take this one down. Let's see if you can answer this one. ये वाला आंसर करिए. Yeah, 15 minutes down. Let's take a sip of water. Cheers to everyone who was able to understand it so far. Cheers to everyone जिनने अभी तक लाइक किया है, and also big cheers to everyone जो अभी जाके लाइक करने वाले हो. Cheers guys. Cheers Anchit. Anyone? पानी पानी पानी. ब्लू तो नहीं है, पर चलेगा, जो भी कलर है चलेगा. आंसर निकला? Anyone? So here when you factorize, you will have to ensure, because you cannot take the variable common out directly, है ना. वेरिएबल को सीधा डायरेक्ट कॉमन आउट नहीं ले सकते, मतलब you will have to split this -10x² को in such a way के when removed दोनों साइड में कुछ ना कुछ कॉमन बचे. Yeah, रॉकेट सिंह, cheers to that then. डेकेथलॉन में आप भी शॉपिंग करते हो मतलब? अच्छा, ये पेड प्रमोशन नहीं है. Okay, Vibhor says B. All right. Others? So what do you do here? We have to split -10x² in such a way that if you group them, this would become something very nice for us to deal with, है ना. Okay, Vaibhav says C, Monica, Hari, Vedant, Rinsi, Khushbu, Shubhangi सब B बोल रहे हैं. Just Vedant is saying C, ठीक है. Sorry, Vedant नहीं, Vaibhav is saying C. Let's try this out now. So how we can write this? X power 4 minus x square
minus 9x square plus 9 greater than equal to 0. So splitting minus 10x square this way. अब यहाँ पे क्या हो गया? I can take x square as common, तो ये क्या हो जाएगा? x square minus 1. यहाँ पर भी x square minus 1 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा? minus 9. Yes. So what is this? This has to be greater than or equal to 0. Or in other words, x square minus 9 times x square minus 1 should be greater than or equal to 0. Now here you have to keep one thing in mind, guys. क्योंकि square है, you cannot directly take square root on both sides. Yes, you can't divide by x on both sides. समझ में आ रहा है आपको? जैसे अगर ये दिया हुआ है x square is greater than equal to 0, x का value you cannot say will be greater than equal to 0 definitely. समझ में आ रहा है आपको? Yes guys, x square अगर greater than 0 है, that does not mean that x is greater than or equal to 0. Why? कि x का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है. -3 the whole square is also greater than equal to 0. Clear? Yes. तो यहाँ पे you have to be very careful not to divide with x and all that. Yes. तो इसको कैसे लिखेंगे? How would we rewrite this particular expression? x square minus 3 square. मतलब इसको हम लिख सकते हैं. We can write this as what? x minus 3 into x plus 3. Am I right? X square minus 9 is nothing but x square minus 3 square. A square minus b square is what? A minus b into a plus b. Similarly, x square minus 1 square को मैं कैसे लिखूंगा? X minus 1 into x plus 1. This entirety should be greater than or equal to 0. Yes. Correct, Rincy. Beautiful. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? Let's find out the critical points, which would be what? पहले वाले में x minus 3 is equal to 0, that means x must be equal to 3. दूसरे वाले में x must be equal to -3. तीसरे वाले में x must be equal to 1 और चौथे वाले में x must be equal to -1. We were to quickly plot this on our number line. 0, 1, 3, -1 and -3. Yeah. तो ये सारे प्लॉट कर दिए हमने. एक्चुअली 0 प्लॉट करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज 0 इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट. अगर 0 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, तो आई कैन एक्चुअली लेट गो ऑफ 0 आल्सो. बट अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन श्योरली कंसीडर दैट एज वेल. ठीक है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स का देख लो. यस. तो इफ आवर वैल्यू इज मोर देन 3, अगर अपना वैल्यू मोर देन 3 है तो क्या हो जाएगा गाइस? एनीवन? अगर वैल्यू मोर देन 3 है, इफ x इज मोर देन 3, देन दिस विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब मोर देन 3 इंक्लूसिव ऑफ दैट से ऊपर जो भी होगा पॉजिटिव होगा. यस. इसके बाद आप क्या कर सकते हो? आफ्टर दिस यू कैन गो लुक एट दिस. कौन सा एंटिटी पे अपन को x इक्वल टू 1 आया था? इस पे, है ना? x इक्वल टू 1 किस पे आया था? इस पे आया था. इसका पावर क्या है? ऑड है, मतलब साइन चेंज होगा. यस. आगे में 1 इंक्लूसिव है. यस. -1 कब आया था? -1 कब आया था? यहाँ पे. ऑड है मतलब क्या होगा? साइन चेंज होगा, प्लस होगा इन दोनों के बीच में. यस. अगेन दिस इज इंक्लूसिव, ये याद में रखना है आपको. अगेन -1 कब आया था? -1 का हो गया. -3 कब आया था? यहाँ पे आया था -3, तो इसका क्या है? ऑड है. दैट बेसिकली मींस द साइन विल चेंज अगेन. और इसके ऊपर जो भी है, -3 से ऊपर जो भी होगा क्या हो जाएगा गाइस? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? If it's more than -3, then what will happen? Apply -4, -4 minus 3 -4 plus 3 -4 minus 1 -4 plus 1 minus, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. Yes. तो you can use this if you don't want to apply too many values and check. अगर आपको ज्यादा वैल्यू अप्लाई करके नहीं चेक करना है तो you can definitely go for this. Yes. अब क्या? प्लस से आओ, नेगेटिव में आओ, फिर वापस पॉजिटिव में आओ, फिर वापस नेगेटिव, दोबारा पॉजिटिव, देन नेगेटिव अगेन. या व्हाट डू वी नीड? वी नीड इट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो हमें पॉजिटिव चाहिए. कौन से पॉजिटिव में उसे शेड कर दीजिए. दिस इज पॉजिटिव. दिस बेसिकली मींस व्हाट? +3. एक बार शेड कर देते हैं, फिर उसके बाद वी विल राइट डाउन द रेंजेस. ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, है ना? तो इसमें क्या है? अभी वी विल हैव 3 डिफरेंट एरियाज. ये क्या होगा? 3 ऑल द वे टू इंफिनिटी, 3 इंक्लूसिव. ये क्या है? -1 to 1 बोथ इंक्लूसिव. और ये क्या है? व्हाट वुड दिस बी? -infinity to -3
only -3 included. Yes, तो ये कहां पर है, ऑप्शन बी या सी? ऑप्शन बी. This is my right answer. Got it? Yes. Any confusions here? तो ये this entire critical point method या wavy curve method is actually a very strong tool for us to fetch this up. Yes. Now you'd be wondering, sir, what is wrong with option C? Option C में क्या आ रहा है? Option C में 2 is possible, है ना? X equal to 2 is possible. तो if I apply here x is equal to 2, तो क्या हो जाएगा? If x is 2, this is negative, this is positive, this would be what? Positive, this would be positive. So the entire term becomes what? Negative into positive into positive into positive is negative. That doesn't satisfy. So C में एक ऐसा value है that doesn't satisfy. Yes. A says all of it is included. That's not true. And none of these भी नहीं है. B अपना आंसर. ठीक है? कवलजीत नेगेटिव क्यों शेड नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या पूछा गया है? अपन को पूछा गया है कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए. 0 के सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए, आपको दिख रहे हैं, हमने यहाँ पे मार्क कर दिए थे 0 के सारे पॉइंट्स. यस, ये सारे 0 के पॉइंट्स हैं, ये सब हमने मार्क कर दिए थे. बट इनके अलावा हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 भी चाहिए, पॉजिटिव भी. इसीलिए ठीक है. कछु कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, वरना आगे बढ़ते हैं. ये अपना 7वां क्वेश्चन. क्विकली ट्राई दिस वन आउट. हाय पूर्वे जी, नमस्ते. बहुत दिन हो गए यार, कहाँ थे? लॉन्ग टाइम नो सी. आई एम डूइंग ग्रेट बडी, हाउ आर यू डूइंग? ठीक है, ये वाला ट्राई करो. क्विक गाइस, क्विक. इसका आंसर जो भी पहले देगा, इसका आंसर जो भी पहले देगा उसे मिलेगा तो कुछ नहीं, बट उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यू कैन डॉज. ये मैं और कुछ बोलूंगा नहीं, ट्राई करके बताओ. यस, दिस इज अ 6th degree equation inequality, my bad, 6th degree inequality. Yes, you can take out x square common and then deal with this, but आपको ये ध्यान में रखना है कि RHS को 0 करना है सबसे पहले. Yes, so what would this turn out to be? This would be 2x power 6 plus 3x power 4 plus 12x square plus 17 is greater than or equal to 70. Yeah, quick, anyone who can answer this? सागर ठक्कर सर की क्लास रहती है. अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब. ए आएगा. हारिका सेज ए, रिंसी सेज ए, विभोर सेज ए. वेरी नाइस गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. यस, आपको यहाँ पे कुछ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ गूगली. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अ गूगली क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2x पावर 6 प्लस 3x पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 17 should be greater than or equal to 0. Yes, whatever value you put for x, any value you put for x, this will definitely be what? x का कोई भी वैल्यू ले लो. -1 करोगे क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि पावर 6 पावर 4 +1 पावर 2 +1 प्लस 17 डेफिनेटली पॉजिटिव. 0 ले लो, 0 ले लो, x को 0 ले लो, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. 1 ले लो, पॉजिटिव. दैट बेसिकली मीन्स दैट फॉर ऑल रियल नंबर्स, yes, the solution क्या है इसका? सारे real numbers. x has to be all real numbers possible. Yes, that basically means any term from negative infinity to positive infinity is our answer. Yes, correct. Superb guys, very nice, very nice. तो यहाँ पे थोड़ा सा presence of mind. Yes, this was a googly. अगर कोई भी इसको बैठ के solve करने बैठा है तो पहले थोड़ा सा observe करो guys, उसके बाद आंसर करना. ठीक है, ब्यूटीफुल एवरीवन, वेरी नाइस, वेरी नाइस. जो कोई भी बोला ऑप्शन ए है, ब्यूटीफुल. यस, नाउ इन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आप इन तीनों में से ऑप्शन बी, सी एंड डी, इफ यू अप्लाई एनीथिंग एट ऑल दैट विल सैटिस्फाई. यस, आप कोई भी वैल्यू लेके लगाओगे तो दैट विल सैटिस्फाई. दैट मींस ऑल ऑफ दीज आर आल्सो राइट,
But then the best out of this is what? Option A. Yes, got this. हाँ ठीक है, चलिए ये रहा आपका दूसरा होमवर्क गाइस। ये आप देख के थोड़ा सा आप सोचोगे कि सर क्या सर आप होमवर्क इतना बड़ा दे रहे हो, बट यही आप घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकोगे। यस, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, होमवर्क नंबर 2 है ये। वैभव श्योर बड़ी, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया आपका गाइस? यस, होमवर्क नंबर 2 कोई तो खींचो खींचो खींचो, खींचा, वेरी नाइस। चलो ठीक है, तो वी हैव 2 होमवर्क क्वेश्चंस फॉर टुडे गाइस। यस, आई वुड डेफिनेटली लव टू सी योर सॉल्यूशंस, आपके जो भी आंसर्स है मैं देखना चाहूंगा। एंड tomorrow at 4 p.m. we have this session, CAT preparation online versus offline। तो आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस विल गिव यू सम बेटर पर्सपेक्टिव। आप अगर सेकेंड गेसिंग कर रहे थे या आप अगर सोच रहे थे कि सर अगर मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे को रिस्क लेके बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आंसर्स टू ऑल ऑफ दैट वुड बी गिवन टुमारो। I would love to see all of you there. Yes, and if you are looking for some proper preparation for CAT, अगर आपको डर लग रहा है कि सर मेरे को डर लग रहा है निकलेगा नहीं निकलेगा, सर I want top B schools, I have my B schools zeroed at IIMs and FMSs and all, then definitely you would need some expertise training on that. Yes, you cannot afford to lose out an opportunity like this. So इसके लिए if you're looking for a place that would definitely push you towards learning, so definitely consider taking up the subscription. Live classes हैं, unlimited interaction with your favorite educators, live goals and leaderboards throughout test series and uska analysis bhi, and the plus point here is what? Live doubt clearing session. Yes, for this you'll have to download the Unacademy's learning app. Yes, look at this, very light on pocket, somewhere around 1000 rupees a month, 1000 rupees a month में आपको मिलेगा quality education, and if you use my code Surana Live और 10% discount भी मिलेगा, है ना? चलो, alright guys, thank you very much। इसके बारे में अगर आपको और कोई questions है, कोई doubts है, generally भी कोई questions है, doubts है, तो feel free to talk to me। I would definitely want you guys to jump over to Ashish sir's class now, but यहाँ से निकलने से पहले please do not forget to hit like, do not forget to share this particular lecture also, and take care, good night, have a great day ahead।